Today we start chapter number 7, cubes and cube roots. So here the first word is cubes. So this chapter is somewhat similar to the chapter number 6, which is squares and square roots. So firstly, let's see what is cube. So cube means, you know that the word cube is used in geometry. A cube is a solid figure which has all its sides equal. How many cubes of side 1 centimeter will make a cube of side 2 centimeter? So here basically we heard this word cube in a geometry. See, cube is like this type of shape. So this figure is a figure of cube. Okay, when we play dice, so that dice is also example of cube. Now here in the case of this chapter, cube means when we multiply any number 3 times, so that is considered as a cube. Let's take an example. Let's suppose I want to find out cube of number 2. So firstly, how can we write cube? 2 raised to the power 3. 2 raised to the power 3. So this is known as a cube of number 2. Similarly, when we write cube of number 5. So here in the case of power, that is shown as a, that is reflected by number 3. So that is known as a cube of that number. So in the case of square, we write number 2 in place of number 3. But in the case of cube, we write number 3 as a power. Now, if suppose we take example of cube of number 2. So 2 into 2 into 2. So that means कि when we multiply number 2 3 times, 2 into 2 into 2. So that is considered as a cube of number 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. So here 8 is the cube of number 2. So by this way we can say that cube is multiplied by 3 times. So when we want to find out cube of any number, so that means कि we have to multiply that number 3 times. Here see, be careful with the words. 3 times means not that multiply. Suppose we want to find out the cube of number 2. So here the multiply by 3 times. So 3 into 2. It's wrong. The ideal method is multiply 3 times, means 2 into 2 into 2. So this is, by this way we can say that we have to multiply that number, that means ki number 2 by 3 times. Now these are called perfect cube or cube numbers. Each of them is obtained when a number is multiplied by taking it 3 times. So here again they say, how can we find out cube of any number? Multiply by taking it 3 times. By taking it means by taking that number. So this is all about the introduction of cubes. Now here are few example of cubes. We note that 1 equals to 1 into 1 into 1 is equals to cube of number 1. So number 1 का cube क्या हो जाएगा? Number 1. Similarly number 8 है, तो number 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2. So here number 2 is repeated 3 times. So here we can write down cube of number 2. So cube of number 2 is number 8. Now next one is 27. So prime factor of 27 is 3 into 3 into 3. So we can write down 3 cube. So by this way number 1 cube, number 2 cube and number 3 cube. So 1 का cube हो जाएगा 1,
2 का क्यूब हो जाएगा नंबर 8 एंड 3 का क्यूब हो जाएगा नंबर 27। सिमिलरली यहाँ पे क्यूब्स गिवन है, 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है नंबर 8, नंबर 3's क्यूब is 27, 4's cube is 64. Now the cube of number 5, so 5 into 5 into 5 equals to 125. Cube of number 6 is 216. Cube of number 7 is 343. Cube of number 8 is 512, and cube of number 9 is equals to 729, and cube of number 10 equals to 1000. So यहाँ पे आपको 1 to 10 के क्यूब्स दिए गए हैं, तो आपको ये सारे क्यूब नंबर्स है वो अच्छे से याद कर लेना है। नाउ हियर फर्दर नंबर 11 टू नंबर 20 के क्यूब्स भी गिवन है। सो फर्स्टली यू ट्राई टू रिमेंबर क्यूब ऑफ नंबर 1 to number 10, and then after try to remember cube of number 11 to number 20. Some interesting patterns adding consecutive odd numbers. So here we can find out cube of number, any number, by following this type of pattern. So in this case, in this pattern, in the first step they have taken number 1. First odd number is number 1. Then in the next step 2 numbers. Then after 3 numbers. Then 4, 5, 6, 7. So by this way we can know that whenever we are following this type of pattern, so in that case we will add one number in each step. That means कि 1, after one step we will add one more number, after one step we will add one more number, after one step we will add one more number. So in the first step they have taken one number, so 1 equals to 1 and 1 is the cube of number 1. Now in the second step they have taken two numbers. So what are the two odd numbers after number 1? That is 3 and 5. So sum of this odd number is number 8, and number 8 is the cube of number 2. Now what are the next three odd number after 5? So that are 7, 9 and 11, and sum of these three odd numbers are 27, and 27 is the cube of number 3. Now what are the next four odd numbers after 11? So that are 13, 15, 17 and 19, and sum of this odd number is 64, and 64 is the cube of number 4. Now what are the next 5 odd numbers after 19? So those are 21, 23, 25, 27 and 29, and sum of this odd numbers is 125, and ultimately 125 is the cube of number 5. So by following the same pattern we can find out the cube of next numbers. Now let's see how can we find out cube of any number by prime factorization method. So firstly 2 and 6 is an even number, so we can divide it by number 2. So here we get number 108. When we divide 108 by number 2, so we get number 54. 54 is again even number, so we can further divide it by number 2, and here we get 27. Now 27 is an odd number, so we can divide it with number 3. So here 9 3s are 27. Now 9 is further divided by number 3, so 3 3s are 9 and 3. So we can divide number 3 by only number 3. So 3 into 1 equals to 3. So these all are the prime factors of number 216. Now the next method, the next step is same as in the case of finding square of any number. So here we write down by prime factorization 216 equals to
2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Now here we see 2 is 3 times and 3 is also 3 times. So in the case of cube, we make a pair of 3 numbers. So here pair of number 2 and pair of number 3. So in this case 2 is repeated 3 times and 3 is repeated 3 times. So यहाँ पे 2 और 3 का एक एक पैर फॉर्म हो गया. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल्स टू 2 क्यूब और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर 3 क्यूब. नाउ यहाँ से हम क्यूब को हटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6. सो दैट मीन्स कि 216 इज द cube of number 6. So by this way we can see that 216 is a perfect cube number. Smallest multiple that is a perfect cube. Raj made a cuboid. Length, breadth and height of the cuboid are 15 cm, 30 cm and 15 cm respectively. Anu asked how many such cuboids will she need to make a perfect cube? Can you tell? Raj said volume of cuboid is 15 into 30 into 15. Now volume of cuboid equals to length into breadth into height. And here in the question length, breadth and height is given, which is 15 centimeter, 30 centimeter and 15 centimeter. So firstly we find out prime factors of these three numbers. So firstly, what is the prime factor numbers? What are the prime factor numbers of 15? So 15, 3 into 5. 3 into 5 equals to 15. Now what are the prime factors of number 30? So that are 2 into 3 into 5. 3 2s are 6. 6 into 5 equals to 30. And what are the prime factors of number 15? Again 3 into 5. So 3 5s are 15. Now let's arrange this all numbers in a form of sequence. So firstly we take number 2, smallest number, then number 3, then again number 3 and again number 3, then number 5 and number 5. Now let's check which are the numbers which are in a pair. So here number 3 and number 5, these two numbers are in a pair. That means कि 3 नंबर है वो पैर में है, बिकॉज यहाँ पे 3 नंबर्स का कितना हो रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 टाइम्स. दैट मीन्स कि 3 को इकट्ठा करके 3 का ग्रुप बना के हमने पैर बना लिया है. सो यहाँ पे 3 and 5 इज ऑलरेडी इन अ पैर. बट यहाँ पे किसका पैर मिसिंग है? नंबर 2 का, बिकॉज यहाँ पे सिंगल टाइम 2 है. तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 into 2. So 2 into 2 into 2. So to complete a pair we require 2 into 2. So 2 into 2 equals to 4. So here we write down, since there is only one 2 in the prime factorization, so we need 2 into 2. So 2 into 2 equals to 4. So 4 to make a perfect cube. Therefore we need 4 such cuboids to make a cube. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था कि how many cuboids will she need to make a perfect cube? So the answer is 4 cuboids are needed to make a perfect cube. Now example number 2 is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. So firstly, by the help of prime factorization method, we find out what are the prime factors of 392. So here the prime factors of 392 is 2 into 2 into 2 into 7 into 7. Now number 2 is already in a pair.
but number 7 is not in a pair, because to complete a group of number 7, to complete a pair of number 7, one number is missing. That number is number 7. So whenever in question they ask us to find out by which number we can multiply, so multiply करने के केस में हम क्या करेंगे, जो नंबर मिसिंग है वो नंबर को हम ऐड कर लेंगे. तो यहाँ पे मिसिंग वाला नंबर कौन सा है, नंबर 7 मिसिंग है. तो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे नंबर 7 ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे नंबर 7 ऐड करना पड़ेगा, because ultimately we have to convert this number into perfect cube number. So here we write down the prime factor 7 does not appear in the group of 3. Therefore 392 is not a perfect cube. To make it a cube, we need one more 7. In that case 392 into 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का ग्रुप और 7 के ग्रुप में कौन सा नंबर मिसिंग था, 7, तो वो भी हमने ऐड कर लिया. सो हियर वी गेट 2744. सो दैट मीन्स कि 392 इंटू 7 इक्वल्स टू 2744. तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर. Example number 3 is 53240 a perfect cube? If not, then by which smallest natural number should this number be divided so that the quotient is a perfect cube? So here in the question we have to find out whether this given number is a perfect cube or not, and if it is not a perfect cube, so by which number we can divide that number to get a perfect cube. So firstly we find out the prime factors of this number. So the prime factors are 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11 and in last number 5. So these are the prime factors of this number. Now we can observe that number 5 is not in a group of 3. So यहाँ पे नंबर 5 है वो सिंगल नंबर है. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे. तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हमको डिवाइड करने का पूछा जाए तो यहाँ पे जितने नंबर्स हैं, रिमेनिंग नंबर्स हैं, जितने नंबर्स दिए गए हैं जो कि ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या किया था, जो मिसिंग नंबर थे उससे हमने मल्टीप्लाई किया था. बट इन द केस ऑफ डिवाइड जो नंबर गिवन है, जो कंप्लीट ग्रुप में नहीं है, उससे हम डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3. सो 53240 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. In the factorization 5 appears only one time. If we divide the number 5 by 5, then the prime factorization of quotient will not contain 5. So अगर मुझे यहाँ से 5 को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये पूरे पोर्शन को 5 से डिवाइड कर लूँगी. राइट, अभी यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है, इक्वल्स टू की राइट वाली साइड है, उससे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं. तो बैलेंस बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53240 डिवाइड बाय 5, और हियर व्हेन वी डिवाइड दिस फैक्टर्स बाय नंबर 5, सो यहाँ से 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा. तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ओनली pair of number 2 and pair of number 11. And when we divide this number by number 5, so here we get a perfect cube number. So when we divide 53240 by number 5, so we get 10648, and which is the perfect cube number. Our next topic is cube roots. Finding the square root, as you know, is the inverse operation of squaring. Similarly, finding the cube root is the inverse operation of finding cube. We know that cube of number 2 is number 8.
So we say that cube root of 8 is 2. We write cube root of a is like this, and that is number 2. The symbol of cube root is represented like this way, and that denotes cube root. So here the cube of number 1 to 5 is given. Cube of 1 is 1, cube of 2 is 8, cube of 3 is 27, cube of 4 is 64, and cube of 5 is 125. Now we know that cube root is the inverse operation of cube. That means कि cube root of number 1 is 1, cube root of number 8 is 2, cube root of 27 is 3, cube root of 64 is 4, and cube root of 125 is number 5. So similarly for number 6 to 10, here the cube and cube roots are given. So यहाँ पे सेम फंडा है, इजी है. जो नंबर का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है या जो नंबर का क्यूब हमें गिवन है, वो जो क्यूब है वही नंबर का अगर हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर का क्यूब हो जाएगा. सो बेसिकली क्यूब एंड क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन. नाउ our next point is cube root through prime factorization method. Consider 3375. We find its cube root by prime factorization. So firstly we find out what are the prime factors of this numbers. So those are 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. Now let's make a pair of this number. So one pair is pair of number 3 and another pair is pair of number 5. So एक पैर हो जाएगी नंबर 3 की, एक पैर हो जाएगी नंबर 5 की. सो यहाँ पे ये पैर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3. सो यहाँ पे इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ नंबर 3 और इसको हम लिख सकते हैं एज अ क्यूब ऑफ नंबर 5. सो ये जो क्यूब है वो क्रॉस हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5. So therefore cube root of 3375 equals to cube root of 3375 equals to 3 into 5. So 3 into 5 equals to 15. So we can say that the cube root of this number is 15, or we can say that the cube of number 15 is 3375. Now here we see that the cube of number 1 to number 10 is already given, and when we observe the last digit of this number is number 1 1, number 8, last digit of 27 is 7, last digit is 4 5 6 3 2 9 0. That means कि last digit of cubes of number starting from number 1 to 10 is different, and that lies from number 0 to number 9, that lies between the 0 to 9. So यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये जो सारे नंबर्स हैं 1 to 10 के अगर हमने क्यूब फाइंड आउट कर लिए और अगर उसकी हम लास्ट डिजिट को चेक करें तो वो सारे नंबर्स की लास्ट डिजिट डिफरेंट है. तो इसकी हेल्प से अगर हमें एस्टिमेटेड क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? लेट्स चेक इट. क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर. If you know that the given number is a cube number, then following method can be used. So here जब भी हमें कोई नंबर गिवन है और हमें ये भी बताया गया है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, एंड देन हमें पूछा जा रहा है कि ये कौन से नंबर का क्यूब है, तो हम इजीली इसे हम चेक कर सकते हैं. कैसे? तो यहाँ पे हमने ये नंबर ले लिया है और उसको हमने 3 डिजिट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड कर लिया है.
start making groups of 3 digits starting from the rightmost digit of the number. So राइट साइड से, दैट मीन्स कि राइट साइड कौन सा हुआ, यहाँ से, तो राइट साइड से हम उसको 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो ये एक ग्रुप हो गया और ये वाला एक ग्रुप हो गया. सो हमारा एक्चुअल नंबर है 857375, उसको हमने ग्रुप में डिवाइड कर लिया है और फर्स्ट ग्रुप इज दिस, सेकंड ग्रुप इज दिस. नाउ अब हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी हम लास्ट डिजिट है उसको ऑब्जर्व करेंगे. We can estimate the cube root of a given cube number through a step-by-step process. We get 375 and 875 as two groups of 3 digits each. First group is 375. Will give you the ones digit of the required cube number. The number is 375 ends with 5. We know that 5 comes at the unit place of a number only when its cube root ends in the digit number 5. So in step 2 क्या बताया गया है कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है उसका हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे, तो वो कौन सा है, नंबर 5. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल चेक फर्दर कि ये 5 डिजिट है वो कौन से नंबर का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करें तो उसमें आता है. तो यहाँ पे सी नंबर 5 का क्यूब है 125 और उसका लास्ट डिजिट है नंबर 5. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये नंबर का क्यूब में लास्ट में आएगा नंबर 5. सो हियर वी गेट 5 एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ द क्यूब रूट. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको ये नंबर के अकॉर्डिंग हमें लास्ट में नंबर 5 आएगा, ये फिक्स पता चल गया. सो हमें एक डिजिट मिल गया हमारे क्यूब रूट का. नाउ नेक्स्ट स्टेप 3 इज नाउ टेक अनदर ग्रुप. सो हमारा सेकंड ग्रुप कौन सा है, 857. सो हियर 857. वी नो दैट क्यूब ऑफ नंबर 9 is 729 and cube of number 10 is 1000. So this 875 is lies between 729 and 1000 because हमें जब भी हम by the help of division method जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे तो उसको इसमें हम क्या करते थे, जो हमारे स्क्वायर वाले नंबर से उसका ही यूज़ करते थे. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट के केस में हमारे जो क्यूब वाले नंबर है उसका ही यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000 और यहाँ पे 857 है वो कहाँ पे आएगा, बिटवीन दिस टू नंबर्स. तो जब भी हम डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, जो नंबर है उसका एग्जैक्ट मैच नहीं तो उससे छोटा वाला नंबर लेते हैं. तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 729. तो 729 किसका क्यूब है, नंबर 9 का. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 9. सो वी नो दैट cube of 9 equals to 729 and cube of 10 equals to 1000. We take the ones place of the smaller number. So here in this case smaller number is 729 as then tens place of the required cube number. So we get cube root of 857375 equals to 95. So this is the estimation kind of method. By guessing this way we can find out the cube root of any perfect cube number, and this method is applicable only for the perfect cube number.